Hello everyone, welcome to Aptitude Plus Academy for Civil Services. This is a video on daily topic-wise news analysis where I'll be covering the news from the Hindu and Indian Express. So apart from the news that is reported in newspaper, I will also provide you some additional content so that can help you in prelims and mains examination. So let's get started with the topic first. Today is 17th of April. The first topic is surge in the wholesale level inflation. Second, economy performance better than 2020. This is an official statement coming from the chief economic advisor, that is Mr. Subramaniam. Third, Iran started enriching uranium to 60% purity. The second last is UK to nod for extradition of businessmen in PNB cases. And the last is vaccine diplomacy that needs a specific clarification. So these are some of the important news and editorial reported in today's newspaper. Apart from this, there would be some MCQs question. This will definitely help you in the upcoming prelims examination because the question that we are asking is mostly from the current affairs. So let's get started. And before I start, a small announcement that we have launched 10 full-length test series. First, basically, this is for the upcoming prelims examination, and we'll be also getting complimentary 3 CSAT tests at very affordable price of 1499. So what you have to do, you have to just refer to the description section of this video where I provided a dedicated link from where you can enroll for these courses. The first news, that is surge in the wholesale level inflation. So it has been talked about WPI, what is wholesale price index, what are the important components, everything will understand because it is important. Both the terms CPI and WPI become very important for your prelims examination, right? Question driven जो है, concept driven question इस पे पूछे जाते हैं. Important for your general studies paper 2 as well, that Indian economy is an issue related to planning and mobilization. So what has happened that अगर WPI की बात करें, जो wholesale level inflation है, that is being measured by WPI और इसको wholesale price index के नाम से भी जाना जाता है. This has been shoot up to 7.39% in March और ये ईयर टू ईयर बेसिस पे इसको रिकॉर्ड की जाती है. और अभी तक की अगर अक्टूबर के बाद जो रेफरेंस ली जा रही है, जो पीछे के रेफरेंस है, सो दिस इज द हाईएस्ट होलसेल इन्फ्लेशन सिंस अक्टूबर 2012. सो द सर्ज हैज बीन विटनेस. इससे पहले 5% के आसपास थी, अभी 7.39 है. Now the increase in WPI has driven largely by the high price of crude oil. फर्स्ट जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस जिस तरह से बढ़ी हैं इंटरनेशनल मार्केट में, उसकी वजह से, एंड द सर्ज इन द प्राइसेस ऑफ द लेवल ऑफ फूड आइटम, pulses and fruits. So these are some of the important reasons because of which the WPI has increased from 5% to 7.39%, right? Now talking about the differences of WPI and CPI inflations, these are some of the additional information that I am giving you so that if a question comes from CPI and WPI, you can easily mark that question and get the correct answers. So WPI की अगर बात करें, WPI keep records of wholesale prices of the goods and CPI measures the average price of the household, right? जो household पे करती है, उस difference में जो household की जो पेमेंट है उस बास्केट को, गुड्स एंड सर्विसेज के जो बास्केट को, उसको सीपीआई में काउंट करते हैं. एंड इवन एज द WPI इज द की मेजर ऑफ इन्फ्लेशन इन सम इकोनॉमी, आरबीआई ने अभी तक इसको नो लॉन्गर यूज्ड फॉर पॉलिसी पर्पसेस, इंस्टेड included it for only for the repo rates. So this is something, an important point from prelims examination perspective. The central bank, that is RBI, currently uses CPI. CPI को यूज की जाती है रिटेल इन्फ्लेशन के तौर पे फॉर मेजरिंग द इन्फ्लेशन इन द कंट्री, राइट, फॉर मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी. तो अगर आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इंडिया में जो आरबीआई जिस चीज़ का अगर खास करके एक बैकग्राउंड लेती है या मैपिंग लेती है कि इन्फ्लेशन कैसे कैलकुलेट करना है, तो दैट इज बीइंग कैलकुलेटेड ऑन सीपीआई एंड नॉट ऑन डब्ल्यूपीआई, राइट. तो जितनी भी पॉलिसीज हैं उसके लिए सीपीआई को लिया जाता है, डब्ल्यूपीआई को नहीं लिया जाता. सो दिस इज ऑल यू वांटेड टू नो द डिफरेंस. Now the new series of WPI has also been there. So with the aim to align the index with base year, it is important for the other economic indicators such as GDP और जो ट्रिपल IP है उसके बेस ईयर को अपडेट किया जाए. तो इसमें गवर्नमेंट ने अपडेट किए. 2011 and 12 has been taken as the new base year. Earlier it was 2004 and 5, right? सो 2004 और 5 पहले बार की बेस ईयर थी, बट इसको रिविजन कर दिया गया बहुत ही पहले, एंड दिस इज इफेक्टिव फ्रॉम 2017 ऑनवर्ड्स, राइट.
सो 4 year बिफोर ओनली इट हैज़ बिन इम्प्लीमेंटेड कि जो CPI की जो इंडेक्सेस होंगी उनकी जो बेस शेयर होगी वो होगी 2011 एंड 2012. Now, calculation of WPI price index, these are some additional information that I'm providing. तो calculation की अगर बात करें, so monthly WPI number shows an average price changes of the goods usually expressed in the ratio or percentages. अगर index की बात करें, index are based on the wholesale price and few relevant commodities that are available. Commodities की अगर बात करें, so they are based on a significant region. They represent different state of economy and represent expected to provide the comprehensive WPI values. एंड फॉर द एडवांस ईयर्स जो कि खास करके जो एडवांसमेंट चेंज कर दी गई है 2004 से 2005 जब चेंज करने के बाद 11-12 कर दी गई है, दे हैव अडॉप्टेड टू इंक्लूड एंड यूजेस 697 आइटम्स, राइट. सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू मस्ट नोट. Now major components of WPI की अगर बात करें कौन कौन से ऐसे components हैं, so the primary article in the major components of WPI further subdivided into food article and non-food article. तो जो अगर आप बात करेंगे WPI के, WPI को दो लेवल पे डिवाइड किया जाता है. फर्स्ट इज फूड आर्टिकल FA जिसको कहते हैं, एंड अदर इज NFA नॉन फूड आर्टिकल्स, राइट. तो फूड आर्टिकल में इंक्लूड होते हैं cereals, paddy, wheats, पल्सेस, वेजिटेबल्स, ये सारे आइटम्स हैं. नॉन फूड आइटम इंक्लूड ऑयल, सीड्स, मिनरल, क्रूड, पेट्रोलियम, ये सारी चीज़ें इनकी बास्केट में आती है. नाउ द नेक्स्ट मेजर बास्केट ऑफ WPI इज फ्यूल एंड पावर विच ट्रैक प्राइजेस ऑफ द मूवमेंट इन पेट्रोलियम एंड डीजल एंड LPG गैसेस, राइट. तो बिगेस्ट बास्केट है इसमें मैन्युफैक्चरिंग गुड्स की. इट स्पैन अक्रॉस अ वैरायटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट जिसमें टेक्सटाइल भी है, अपैरल्स है, पेपर्स हैं, केमिकल्स हैं, प्लास्टिक है, सीमेंट्स है, मेटल और बहुत सारे अलग भी आइटम है. मैन्युफैक्चरिंग गुड बास्केट की अगर बात करें सो दैट ऑल्सो इंक्लूड फूड सच एज शुगर, टबैको, वेजिटेबल्स, एनिमल ऑयल एंड फैट्स, राइट. So these are some of the important points that you need to understand from WPI points of view. And just let me know how do you like the elaboration of any point, because I personally feel किसी भी चीज़ को थोड़े डिटेल में जाना सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है. तो डू शेयर योर वैल्यूबल कमेंट एंड व्हाट मोर यू वांट me to explain that also you can write in the comment section. और अगर आप इस जो भी मैंने आपको समझाया इसके बारे में आप और ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे आपको ये सारी कंटेंट ऑलरेडी रिटन फॉर्मेट में मिल जाएंगी. Now, economy performance better than 2020. Official confirmation coming from the Chief Economic Advisor, that is KV Subramaniam. And this is important for your General Studies paper too. Now, the Chief Economic Advisor of India, KV Subramaniam, has said that India has recently, India economy is better shape as compared to the previous COVID-19 wave, right? As we know, COVID की जो second wave चल रही है, it has been expected that this will continue till June. There is no official confirmation, but जो scientist के experiences हैं उनका कहना है कि जून से जुलाई तक ये wave चलेगी. एंड गवर्नमेंट इज़ नॉट लुकिंग फॉर लॉकडाउन. कुछ पॉकेट्स में अलग अलग जगह पे वीकेंड्स पे लॉकडाउन लगाई गई हैं, बट सबसे पॉजिटिव बात यह है कि हमारे पास वैक्सीन है, राइट. इंडिया हैव अ वैक्सीन फैसिलिटी. दैट इज अ रीजन दैट वी आर वेरी कॉन्फिडेंट बिकॉज ऑफ द वैक्सीन, राइट. एंड ही सेड दैट द सेकेंड वेव देयरफॉर द पीपल शुड बी केयरफुल एंड फॉलो द रेगुलेशंस. नाउ अगर लॉकडाउन की इम्पैक्ट की अगर बात करें, we know that the lockdown, the national lockdown, which was among the strictest lockdown in the world, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई following the outbreak of the pandemic in 2020. From March onwards we had a lockdown, right. 2020 से lockdown कर दी गई थी and India went into one of the most strictest lockdown, leading to the massive contraction of 24% of the GDP. तो -24% तक GDP में contraction witness की गई थी. जो core sector है, ट्रिपल आईपी की जो कोर सेक्टर है उसमें भी डिटोरेशन देखी गई है. सारे सेक्टर्स में नेगेटिव रही है. एग्रीकल्चर को छोड़ के वेयर एग्रीकल्चर समथिंग विच हैज़ पॉजिटिवली परफॉर्म विथ 3.4%, राइट. माइग्रेंट लेबर की इश्यूज अगेन समथिंग विच इज़ वेरी, दे हैव बीन सीवियरली इम्पैक्टेड. अनएम्प्लॉयमेंट, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जिसकी इम्पैक्ट लॉकडाउन की वजह से हुई. नाउ प्रेजेंट कोविड केसेस की अगर बात करें, एज वी नो दैट द केसेस इज ऑन अ सर्च. The states like Maharashtra reported 65,000 of cases daily. And if you talk about the national capital, that is Delhi, the cases are none less than 18,000 to 15,000 daily, right? So these are the cases that are reported.
और ये जो सेकेंड वेव है दिस इज जंप इन द केसेस, बहुत ही एक्सपोनेंशियल इंक्रीज हो रही है. अगर आप देखोगे जनवरी के बाद जो केसेस इंक्रीज हुई है दैट इज लाइक दिस द सर्ज दैट इज गोइंग राइट. सो दिस इज द सर्ज दैट इज कंटिन्यूइंग. और मिनिस्ट्री ने ये कहा है कि जो सेकेंड consecutive day in the country that has reported 2 lakh of the cases. So you can see the level of infection, and as of now हर दिन 2,17,353 cases, 2,17,353 cases has been reported. Now in the summit actually Mr. Subramanian was addressing an Amazon conference. So he said e-commerce और digitalization पर उन्होंने कुछ बातें कही है. So the chief economic advisor said that one of the key things that stood during the pandemic is the rollout of e-commerce and digitalization. And definitely we have to appreciate the technology, we have to appreciate the e-commerce and the digitalization process that has actually helped India in overcoming a lot of problems, right? So he said 800 million people were provided essential support through the public distribution system, cash transfer, Jan Dhan, इवन आधार मोबाइल जो है जैम के थ्रू सारी चीज़ों लोगों के जो बेनिफिट्स है वो बेनिफिट करवाई पाई गई सरकार की तरफ से ओनली विथ अ सिंगल क्लिक ऑफ अ बटन. यू मीन टू से द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ डिजिटलाइजेशन राइट. Now, while most advanced economies like US, they have provided financial support to the citizen through check, India is a country that has made it complete cashless, and the beneficiaries are getting the benefit from the government directly on their bank account, right? Now, Iran started enriching uranium to 60%. So this is something which is a concern that has been raised regarding the productions. Important for your general studies paper 2, effects of policy and politics of developing and development nations. So the Iran authorities has officially confirmed that it has started enriching uranium to 60%, which is too high. And Iran began enriching uranium program to the highest level ever. और ये खास करके क्लोज टू वेपन ग्रेड की लेवल है जो कि 60 above 60% and 70% is considered to be the weapon grade and lethal. सो रीजंस क्या है इस तरह के डिसीजन लेने की. ईरान एक तरह से प्रेशर क्रिएट करना चाहती है यूएस पे. सो द मेन एम बिहाइंड द स्टेप इज टू प्रेशर द टॉक इन द वियना दैट इज एम एट रिस्टोरिंग द न्यूक्लियर डील. और जो वर्ल्ड पावर्स हैं उनमें जिस तरह से जो सैंक्शन लगाई गई है ईरान पे उसको हटाया जाए. सो अंडर द अकॉर्ड, जो अकॉर्ड है वियना कन्वेंशन में, वहाँ पे ये बातें कही गई है वियना अकॉर्ड में. ईरान हैज़ कमिटेड टू कीप एनरिचमेंट टू 3.67%. और अभी आप देख सकते हो दे हैव इंक्रीज टू 60%. यू कैन अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ एनरिचमेंट दैट दे आर डूइंग. एंड जो सेफ साइड था उन्होंने धीरे धीरे ग्रेजुअली जनवरी में 20% तक किया था. नाउ स्टीप इंक्रीज टू 60%. Now, highly purified uranium is needed to make atomic bomb. Atomic bomb के लिए इसको use की जाती है. And the main point of Tehran action plan is to give leverage to the nuclear talks. Now, the move is likely to raise tension on the Iran negotiation over Vienna. और वो चाहता है कि US एक agreement करे where economic sanction that has been imposed in Iran should be lifted and that should be eased out. So these are some of the prominent reasons that experts are of the opinion because of which the Iran has increased the level to 60%, right? Now Iran nuclear program की बात करें, JCPO की बात करें. So in 2015 only, Iran has grouped with P51 countries जहाँ पे UK, USA, France, China, Russia and Germany, they have agreed for a long deal, right? And the deal was named as a joint comprehensive plan for action, right? तो इसको न्यूक्लियर डील में किस तरह से एक पीस प्रोसेस के साथ स्टेबिलिटी लाया जाए इसकी कोशिश की गई थी. एंड अंडर द डील ईरान एग्रीड टू कर्ब द न्यूक्लियर एक्टिविटी एंड रिटर्न फॉर द लिफ्टिंग सैंक्शन टू एक्सेस हैव अ ग्लोबल ट्रेड. तो ग्लोबल ट्रेड की एक्सेस ईरान को मिल सके उसके लिए ईरान ने ये एग्री किया था कि दे वुड बी लिमिटिंग देयर न्यूक्लियर एक्टिविटीज जो है उसको लिमिट करेंगे. Now the agreement also allowed Iran to accumulate small amount of uranium only and only for research activities, right? और enrichment किसी और दूसरे तरीके से नहीं की जाएगी. Now Iran was also required to redesign heavy water reactor built in whose spent the fuel contain plutonium suitable bombs and allow the international expansions. तो खास करके अगर बात की जाए ईरान की तरफ से
So they are increasing. There's no doubt that they are not increasing, but definitely some important sanction has to be there, because nuclear war is something which is very dangerous for mankind and for the entire world. Now, ईरान ने क्या स्टैंड लिया? ईरान के जो हेड हैं एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन के, ही सेड कि कंट्री की जो सिविलियन न्यूक्लियर आर्म है वो इस तरह से सेंट्रीफ्यूजल को जो बढ़ाई है, उन्होंने सिर्फ अभी 9 ग्राम तक प्रोड्यूस किया है पर आवर, एंड दे वुड बी ड्रॉपिंग टू 5 ग्राम पर आवर इन द कमिंग डेज. सो दिस इज ऑफिशियल कंफर्मेशन फ्रॉम ईरान. और जो ईरान के चीफ एडवाइजर्स हैं, खास करके एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशंस के, ही इज द हेड ऑफ दैट. सो ही सेड that 60% is of that for particular purity is higher, is like previous जो enrichment की गई उससे काफ़ी कम है. जो वेपन ग्रेड के लिए ज़रूरत पड़ती है वो 90% की ज़रूरत पड़ती है. बट डेफिनेटली यू कैन अंडरस्टैंड जहाँ पे 3.7% अलाउ की गई है, वहाँ पे ये 60% तक को कर रहे हैं. दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी डेंजरस. प्रीवियसली टिल जनवरी दे वर ओनली हैविंग 20% ऑफ द प्योरिटी. Right, so this is something, a signal that is coming from the Iran. And definitely the world leader need to acknowledge it and come to a solution with Iran. And Iran has been enriching up to 20%, even it was short technical step to the weapon grades. So these are the concerns that has been raised with regards to Iran uranium enrichment programs. Now, UK not for extradition of businessmen in PNB cases. In this particular news, the only point that you have to understand is how extradition process work. We are least concerned about this man known as Nirav Modi. हमें इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं चाहिए, बट आपको ये जो प्रोसेस है उसको समझना पड़ेगा, because it can be asked in your interview or in the prelims examination also, right? So, government policies and intervention for development in various sectors. सो रिसेंटली यूके के जो होम डिपार्टमेंट है उन्होंने कहा है कि वहाँ इंडिया के जो बिजनेसमैन है, ही इज़ अ बिजनेसमैन, ही इज अ बिजनेस ऑफ डायमंड, नीरव मोदी, ही हैज़ बिन कनेक्शन विद 13,758 करोड़ रुपीज़, विच इज़ अ ह्यूज अमाउंट. और पीएनबी बैंक्स ने उन्हें फ्रॉड किया पंजाब नेशनल बैंक से. एंड द अक्यूज हैज़ नाउ लीगल रिकर्शन टू अप्रोच द यूके हाई कोर्ट. जो ये एक्सट्रेडिशन की केसेस को अलाउ किया गया उसमें उसके पास ऑप्शन है, उस अक्यूज्ड के पास, कि वो 14 डेज तक की परमिशन मूव कर सकता है वहाँ के सेक्रेटरी में. नाउ ही हैड फ्लीड कंट्री फ्रॉम जनवरी 2018. अब उसको 3 साल होने चले हैं ऑलमोस्ट जब वो इंडिया छोड़ करके जा चुका था. नाउ इंडिया हैज़ रिक्वेस्टेड हिज अरेस्ट इन लंडन, and in 2019 only he has been from judicial custody in London, right? Now we'll see what is the important thing that you need to understand, right? तो फाइंडिंग ऑफ द कोर्ट की अगर बात करें तो वहाँ की जो वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट होती है, उन्होंने सफिशिएंट ग्राउंड पाया कि उसके खिलाफ ट्रायल की जाए. एंड इवन इट टुक रिकॉर्ड्स ऑफ द एविडेंस फर्निश्ड बाय द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो इंडिया की सीबीआई है, एंड इवन द ईडी, दे हैव आस्क्ड द कोर्ट कि इसको हमें लेके जाना है. ही हैज बीन एलिज्ड for conspiring and destroying the proof against him and intimidating witnesses. Now, for you it is important to understand कि what is the extradition treaty. यहाँ से सारी कहानी आपके लिए important है. तो सेक्शन 2D of the Indian extradition treaty define कि जो extradition treaty है या जो एक्सट्रेडिशन एग्रीमेंट है, इंडिया के साथ बहुत फॉरेन कंट्रीज़ के साथ एक्सट्रेडिशन एग्रीमेंट है, जहाँ पे किसी भी फ्यूजिटिव क्रिमिनल्स को ये बाइंड करती है कि वो दूसरे कंट्री से यहाँ उनको ला सके, एक्सट्रेडिट कर सके फॉर द लीगल प्रोसेस. एक्सट्रेडिशन का मतलब होता है उसको वहाँ से अपने नेटिव कंट्री में लाना. ना जनरली देयर आर 5 प्रिंसिपल दैट हैज़ बीन फॉलोड अंडर द ट्रीटी. फर्स्ट इज एक्रेडिशन अप्लाई टू द ऑफेंसेस दैट आर मेंशन इन द ट्रीटी. दूसरा प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअल क्रिमिनलिटी, दैट इज मीन्स फॉर ऑफेंस साउथ. उसके अलावा रिक्वेस्ट कंट्री मस्ट सेटिस्फाई देयर प्राइमा फेसाई इन द केस मेस्ड अगेंस्ट द ऑफेंडर. तो प्राइमा फेसाई होना चाहिए कि हाँ ही इज द ऑफेंडर. उसके अलावा एक्सट्रेडिशन शुड बी मेड ओनली फॉर ऑफेंसेस विच एक्सट्रेडिशन वाज टू बी रिक्वेस्टेड, and it is also the legality, that the immunity which has been provided to accused, that he should also be given the fair trial. So इंडिया की अगर बात करें, एक्सट्रेडिशन ट्रीटी इंडिया में 43 कंट्रीज के साथ है, और कुछ 43 कंट्रीज हैं जिसमें एक्सट्रेडिशन ट्रीटी की गई है, और एक्सट्रेडिशन जो एग्रीमेंट है वो 11 कंट्रीज के साथ है. सो अदर एक तो ट्रीटी होती है, दूसरी होती है एग्रीमेंट. सो देयर आर 2 डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, राइट? नाउ जनरली अगर बात करें, कुछ 5 प्रिंसिपल है जो मैंने आपको बता दिया. दिस इज द 5 प्रिंसिपल विच आई हैव टोल्ड यू. दिस इज मोर द रिपीटेशन ऑफ द स्लाइड.
So if you have not get it correctly from this point, what you can do, you can refer to this slide, right? So इसी point को मैंने यहाँ पे zoom करके आपके लिए अलग से कर दिया so that it is easily visible to you, right? And as I've told you, treaty जो है वो 43 countries के साथ है और extradition agreement सिर्फ 11 countries के साथ है. Now coming to the other news, that is vaccine diplomacy that needs specific clarifications. So this is written by Vivek Kaj, he is an Indian Foreign Services officer, and this topic is important for your Gender Studies paper 2, bilateral and regional grouping agreements evolving India's interest. So some of the important facts coming from this editorial. So what has happened? Government said that they need to convince Indian for the export of the vaccine that was made for the cost of health. तो बहुत सारी बातें कही गई है अभी जिस तरह से इंडिया में वैक्सीन की शॉर्टेज है उसको लेकर के कि वाई गवर्नमेंट इज एक्सपोर्टिंग लॉट ऑफ वैक्सीन्स, बट द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री हैज सेड कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है फॉरेन कंट्रीज को दैट इज अंडर एन ऑब्लिगेशन और वो कमिटमेंट है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे जिस वजह से इंडिया ने वैक्सीन दूसरे कंट्री को दी हैं. सो द मिनिस्टर ऑफ स्टेट in the Ministry of External Affairs has said that India was sending this vaccine abroad for of grant commercials and of the manufacturing under the Gavi COVAX facility. तो Gavi COVAX facility के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है. This is something which is very important. So under this facility, India has an obligation as a member to provide the multilateral body and receipt of the vaccine from this body, right? So commitment है, international commitment जिस वजह से इंडिया इसको दे रही है. But again, there's another point that has been raised from the manufacturing of Indian vaccine that the price that government has negotiated is too low, right? इवन इंडिया में जो वैक्सीन है वो 250 रुपीज़ पे दी जा रही है और वहाँ पे ये बातें कही गई है कि गवर्नमेंट ने उनको नेगोशिएट करके 150 रुपीज़ पे पर डोज देने को कहा है, जबकि प्राइवेट कंपनीज का कहना था कि वो 1000 रुपीज़ से कम में नहीं देंगे. सो दिस इज समथिंग दैट इज अनदर लेवल ऑफ डिबेट. वी आर नॉट गेटिंग द डिटेल ऑफ दिस. नाउ एज ऑन April 13, इंडिया हैज supplied almost 65 million doses of vaccine to 90 countries. So you can see the potential of India. एक तरफ से potential तो है हमारे पास जो हमने इतने countries को मदद की है, but definitely it is a time जहाँ पे इंडिया में केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो पहले खुद के लोगों को वैक्सीनेशन अच्छे से कर दी जाए, उसके बाद वी कैन सी द कंट्रीज एज वेल, या फिर कुछ एक स्मॉल परसेंटेज पे दी जा सकती है बिकॉज यू कैन नॉट स्टेक योर पीपल, आर सिटीजन कैन नॉट बी पीपल नॉट स्टेक. सो 10 मिलियन जो ग्रांट्स हैं दी गई है, 66 मिलियन कमर्शियल बेसिस पे और 19 मिलियन अंडर द कोवैक्स प्रोग्राम, राइट? एंड दीज एस्टिमेट आर बेस्ड ऑन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स स्टैटिस्टिक्स. नाउ फॉरेन पॉलिसी के बारे में अगर बात करें तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि वी मस्ट थिंक ऑफ इंटायर ह्यूमैनिटी एंड नॉट मेयरली दोज हु आर अवर ओन साइड ऑफ द बॉर्डर्स. ह्यूमैनिटी मस्ट बी देयर फॉर एंटायर वर्ल्ड वाइड होनी चाहिए और किसी एक धर्म जाति के आधार पर नहीं की जानी चाहिए, ऐसा कहना है प्राइम मिनिस्टर का. एंड ही इवोक द एंशिएंट फ्रेजेस दैट इज वसुधिका कुटुंबकम, उसके इसको इस एसेंस को हमें जीवित रखना है. दिस इज व्हाट द प्राइम मिनिस्टर हैज टू से. तो अगर आप ऐसे लिखते हैं, इफ यू आर राइटिंग एनीथिंग इन ऐसे, यू कैन कोट दिस वर्ड्स, और इफ यू आर राइटिंग इन मेंस पेपर यू कैन आल्सो राइट देयर. फैक्टर है जो बहुत ज़्यादा मैटर करती है. द गवर्नमेंट हैज़ मेड एस्टिमेशन ऑफ वेरियस वैक्सीन्स दैट कुड सेंड अब्रॉड. इंटरप्ले 3 फैक्टर्स. सबसे पहले डोमेस्टिक प्रोडक्शन किस तरह की है, डिमांड ऑफ नेशनल वैक्सीन प्रोग्राम कैसी चल रही है इंडिया में, रिक्वेस्ट फॉर द वैक्सीन मैन्युफैक्चर इन इंडिया, बिकॉज एज ऑफ नाउ 3 ऐसे इंपॉर्टेंट वैक्सीन हैं इंपॉर्टेंटली जो एडमिनिस्टर किए जा रहे हैं फॉर द इमरजेंसी पर्पसेस. एंड वॉट इज नॉट नोन इज हाउ द फैक्टर वेर कलेक्टिवली एड्रेस्ड in the decision making the processes. Now what is the way forward? If you're writing this thing in the mains examination, you have to equally write the way forward. तो way forward की अगर बात करें, जो टेनिस फॉर मिनिस्ट्री है, they have clarified कि जो obligations थी गैवी के अंदर उसकी वजह से इंडिया ने एक्सपोर्ट किया. सर्टनली वैक्सीन को ग्रांट के तौर पे देखा जाना चाहिए. जो कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं कंपनीज के साथ उसको भी इस्टेब्लिश की गई है, बट ये ज़रूरी हो जाता है कि जो वैक्सीन हमने दूसरे कंट्रीज़ में भेजे हैं अंडर द फॉरेन पॉलिसी ऑब्लिगेशन, दैट नीड जस्टिफिकेशन टू द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री. और स्पेसिफिक क्लैरिफिकेशन ये है कि क्या जो एक्सपोर्ट की गई है वो इंडियन के जो हेल्थ कॉस्ट है उस पर रख के तो नहीं की गई है. इवन द कॉस्ट ऑफ द हेल्थ फॉर द पीपल ऑफ कंट्री इन इंडिया इज सिग्निफिकेंटली वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? So this would be the way forward, because for a country like India where 133 crore is the population, we first need to address it, because only अभी तक हमने
आज की अगर बात करूं मैं तो सिर्फ ऑलमोस्ट 13 करोड़ टू 14 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट किया गया है, राइट? सो दिस इज अ वेरी लेस नंबर, ओनली 10%, इवन नॉट 10% ऑफ पॉपुलेशन हैड बीन वैक्सीनेटेड. Now coming to the MCQs question of the day. The first question is regard to the inflation. Consider the following statement. Inflation measures the average price changes in the basket commodities and service over the time. Inflation is an indicative of decrease in the purchasing power of a unit in a country's currency. So what you have to say? You have to just write the correct options in the comment section down below. और आंसर करने के लिए वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाएं, वहां पे अपने करेक्ट आंसर लिख सकते हैं. Second question, consider the following statement about the Great Indian Bustard, because important question from environment is being asked in the exam. The Great Indian Bustard is one of the heaviest flying bird in the world. It has also happened to be the state bird of Madhya Pradesh. आपको बताना है correct option क्या है. थोड़ी सी question tricky है. If you know, it will be very easy for you to answer. So just let me know how many of you know the correct answer and write your answer in the comment section. And if you're new to our channel, do not forget to subscribe Apti+ Academy for Civil Service on YouTube. If you like this video, do not forget to give thumbs up. If you have any other concern, do let us know. We'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Wish you all the best. Stay home, stay safe. Thank you so much.